Good afternoon, history class 11th. Good afternoon, history class 11th. I am Jagdish Kumar, qualification MA B.Ed, designation lecturer in history, school HSS Noxini, district यूनिट 9 है ये, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड इस यूनिट है। और क्वेश्चन है हाउ द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इफेक्टेड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी बिगिन एन ऑल टुगेदर न्यू एरा। तो जब रेलवे की ईजाद हुई इंग्लैंड में तो एक नया रिवॉल्यूशन आया। इट हैड फॉर रीचिंग consequences ऑन द ब्रिटिश सोसाइटी। Richard Trevithick 1771 to 1833 CE. Richard Trevithick was a famous engineer England. इंग्लैंड का एक बड़ा इंजीनियर था। He designed an engine in 1801 CE which was called Puffingdale. The engine used to pull truck around the mine where we worked in Cornwall. It was a quite heavy engine, बड़ा heavy engine बनाया था इसने। Thus it was not capable of traveling a long distances. In 1804 CE, Trevithick succeeded in designing world first steam engine. इसने वर्ल्ड का सबसे पहला steam engine भी बनाया था। It was given the name Pendron. It weighed 7 tons. इसका वजन 7 टन था। On the first day it traveled a distance of 9 miles. तो पहले दिन ये 9 मील तक चलता था। It had 5 bogies attached to it. 5 बोगियाँ इसके साथ अटैच की जाती थी। Wherein were traveling 70 passengers. It was also not a successful exercise. There are 2 factors behind. इसके पीछे 2 factors थे। Firstly, this engine was also quite heavy engine था। Thus it used to break the weak railway lines. तो weak जो रेलवे लाइन थी वो टूट जाती थी। Secondly, it could not withhold steam for a longer time. और steam को भी hold longer time तक नहीं कर सकता था। Despite this, Richard Trevithick did a great job in laying a foundation of railway in England. तो उसने सबसे पहले इंग्लैंड में रेलवे की इजाज़त की साइंटिस्ट ने। जॉर्ज स्टीफन 1781 to 1848। जॉर्ज स्टीफन वाज a great engineer of England. वो इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा इंजीनियर था। ऑन अकाउंट ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ रेलवेज। तो उसका भी बहुत बड़ा योगदान था। ही इज़ राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ द रेलवे। उसको फादर ऑफ द रेलवे कहा जाता था जॉर्ज स्टीफन को। ही डिज़ाइंड द स्टीम इंजन कॉल्ड बुचर इन 1814 सी। इट वाज डिज़ाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल ओनली। तो ये खाली कोल की सप्लाई के लिए बनाया गया था ये रेल। दिस इंजन कुड पुल द वेट अप टू 30 टन। 30 टन तक ये कोयला ले जा सकता था। अप टू हिल एट 5 mph. The first passenger train started between Stockton and Darlington cities in 1825 CE. Its engine was named Rocket. इस इंजन को रॉकेट भी कहा जाता है। It was a steam engine. It had 30 bogies attached to it for accommodation the passengers. George Stephen himself ran the engine for first 9 miles. It took 2 hours. 2 घंटे लगते थे to complete the journey. Later on it started running at a speed of 5 mph. Undoubtedly this was an epic making event according to the famous historian C.J.H. Hayes. The success of this venture ushered in a period of extensive railway building. In 1830 CE, Liverpool and Manchester were connected by railway. तो लिवरपूल और मैनचेस्टर को रेलवे से कनेक्ट किया गया 1830 में। 15 नवंबर 1830 सी द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूक ऑफ वेलिंगटन डेडिकेटेड द said railway passage to the nation. The train running on this track attained speed of 30 mph. Unfortunately, on its maiden journey, a famous British parliamentarian, Hoskinson,
died due to the being hit by a said train. एक ट्रेन की हिट की वजह से उसकी मृत्यु हो गई. जॉर्ज स्टेफन soon became ever popular due to his outstanding accomplishment, and he was bestowed upon the office of the chief engineer railway. James Stephen died in 1848 CE. The development of the railway after Stephen. The work of the designing Development of the railway after Stephen. The work of designing and improving railway engine continued even after the death of George Stephen. जॉर्ज स्टेफन के बाद और इम्प्रूवमेंट हुई इंजन बनाने में. During the period of 1830 to 1850 CE, railway lines became up to the distance of 6,000 miles. 6,000 miles were constructed into two stages. I.K. Brunel constructed a railway bridge and tunnel. उसने रेलवे ब्रिज और टनल बनाए 1841 CE with an aim to make it convenient for the passengers. Bradshaw prepared the first railway timetable. तो ब्रडशॉ ने रेलवे टाइम टेबल भी बनाया. In 1846 CE, British government passed some legislation relating to the railways. Effects. अब इसका असर क्या होगा, क्या असर हुआ इनका. The advent of the railway had far-reaching the consequences for the British society. It gave an impetus to the process of urbanization in England. तो urbanization हुआ, एक शहर से दूसरे शहर के लिए आने जाने की सुविधा हुई. The several big towns came into existence. नए शहर बने. The names of London, Bristol, Manchester, Leeds, Liverpool, Wales, Birmingham, Birmingham and Yorkshire and worth mentioning among these. Thus the importance of the villages and minor towns began to decrease. Town और village decrease हो गई. In the grand society, the railway made it possible for the people to undertake traveling distant places for the purpose of tourism. The people to undertake traveling distant places for the purpose of tourism. It proved to be a wonderful meaning for their entertainment. The railways made it possible to transport his material, coal, iron, cotton, etc. as required industry. तो कारखाने के लिए रॉ मटेरियल लाने ले जाने में आसानी हो गई रेलवे की इजाद से. एट कम्प्लीटली लेस रेट्स एंड इन लेस टाइम. लेस रेट और कम टाइम में पहुंच जाते थे. इट गेव एन ऑल टुगेदर न्यू विगर vitality to the industrial revolution in England. Railway made it possible to transport factory made goods from England to distant markets. The construction of railway provided employment avenue a large number of people. लोगों को रोजगार भी बहुत ज़्यादा मिल गया. Undoubtedly, the railways played an outstanding role in giving a new direction to the British society. तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है. नमस्कार.